हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडिया डिफेंस सिस्टम। इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के आंसर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है, द डैश ऑफ इंडिया इज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। इसका आंसर है बी, प्रेसिडेंट। सेकंड पार्ट है, द डैश हैज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाइन। आपका आंसर क्या रहेगा? पी, कोस्ट गार्ड। थर्ड पार्ट है, द डैश हैज बीन स्टेबलाइज्ड विद द पर्पज इन instilling among students the love of discipline and military training। इसका आंसर है सी, नेशनल कैडेट कोर NCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज नेसेसरी टू एंड टेररिज्म टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी। इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म। सेकंड पॉइंट है, टेररिज्म टारगेट कॉमन इनोसेंट पीपल। थर्ड पॉइंट है, इट एम टू क्रिएटिंग टेरर ऑफ फियर इन देयर माइंड्स सो दैट दे बिगिन टू फील इनसिक्योर। फोर्थ पॉइंट है, thus in order to protect human security, it is necessary to put an end to terrorism. Next question है, every nation creates a strong security system for itself। इसका आंसर है, national security is closely connected with geography because national security is more likely to be endangered by nations who are geographical closer। Second point है, a nation must assess the threat to its geographical boundaries and the sources of that threat। इसका थर्ड पॉइंट है, in order to keep this threat at bay, the nation has to increase its military might। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are no issue of dispute between India and Pakistan। इसका आंसर है, there are several disputes between India and Pakistan। For example, the Kashmir issue dispute over river water sharing, the problem of inflection dispute over the border, etc. Second point है, India has continually tried to solve these issues through discussion and negotiations। राइट शॉर्ट नोट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स। Rapid Action Force performs the task of bringing people's life to normalcy by moving in quickly in incidents of threat to national security such as bomb blast or jobs. Human security. In the post-Cold War period, the concept of national security changed and became broader. Second point है, national security is not just the security of the country but also of the people living in it because security is ultimately for the people. Hence, human security refers to human-centric thinking. In human security, it is expected that human beings should be protected from all sorts of danger and they should be given the opportunities of education, health and development. और फिर आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया दैट conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker section. Home Guard. This organization was established in the pre-independence period. देन आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा, citizens can join the home guard and assist in defense of the country. Third point रहेगा, any citizens, man or woman between the ages of 20 to 35 years can join
द होम गार्ड। आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, दिस फोर्स ऑफ द फॉलोइंग टास्क मेंटेन पब्लिक security, supply of milk, water and other essential services during riots or strikes, to regulate traffic, to help people at the time of natural disaster like floods, earthquake, etc. Answer the following questions in brief. First, what are the threats to national security? India's security is not only threatened by the outside powers but also from within. Second, it is not just the difference between external security and internal security that is important anymore. उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल the Naxalite movement is a threat to India's internal security. Write the function of border security force. Security force performs tasks like creating a sense of security in the minds of people living in areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border, etc.